अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका खैर मकदम है। एक ताज़ा तरीन शुमारे के साथ शख्सियात लेके हम फिर से हाजिर हैं आपकी खिदमत में। तो आप जहाँ कहीं से भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं, लाइव देख रहे हैं, वेलकम टू द शो। मैं हूँ आपकी मेज़बान, आपकी होस्ट नौशीन याकूब, और आपका खैर मकदम करती हूँ फिर से एक बार शख्सियात प्रोग्राम में। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमारे इस प्रोग्राम में हम दावत देते हैं मुख्तलिफ शख्सियात को, जिनका की बैकग्राउंड होता है, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप रिलेटेड हो या हेल्थ रिलेटेड हो, वो मेडिकल फील्ड से हो या शायरी के फील्ड से हो या एजुकेशन उनका बैकग्राउंड हो, एकेडमिशियंस हो। आपने देखा है कि पिछले कई एपिसोड्स में हमने बहुत ही एक्सपीरियंस्ड शख्सियात को भी दावत दी, और बहुत ही जो यंगस्टर्स हैं, हमारे यंग सोशल एक्टिविस्ट्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको बुलाया है अपने प्रोग्राम में अभी तक। और आज की जो हमारी शख्सियत है बिल्कुल बहुत ही इंस्पायरिंग है हमारे खास करके यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए, या जिनके कुछ सपने होते हैं कि हम अपनी कुछ लेगेसी स्टार्ट करें, अपना कोई काम करें, सेल्फ डिपेंडेंट या इंडिपेंडेंट बने। इसी बारे में हम बात करेंगे। इंशा मीर हमारी आज की शख्सियत है, जिनके साथ हम उनके सपनों के बारे में, उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में और इको कैश के बारे में, जो उनकी फाउंडेशन है, जो उनकी कंपनी है, सस्टेनेबिलिटी पे उन्होंने इस चीज की फाउंडेशन रखी, नींव रखी और बुनियाद रखी इको कैश की। तो हम इनसे ही जानेंगे इको कैश का मतलब क्या है और कैसे इस चीज का इन्होंने स्टार्ट किया। हाउ वाज इको कैश बोर्न? She's so young and inspiring and vivacious, so we'll ask her कि किस तरह से इन्होंने इस आइडिया को जन्म दिया, पहले अपने दिमाग में फिर प्रैक्टिकल लाइफ में। तो वेलकम इंशा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपका खैर मकदम है शख्सियात में, आरएनए लाइव में आपका खैर मकदम है। Thank you so much, Naushin, for inviting me. And thank you for the audience who are watching us right now. So you mentioned about EcoCash. So maybe shayad I don't believe I have any identity. It's because of EcoCash that I hold an identity now, and I say that very proudly. So Alhamdulillah for that. And EcoCash, how was it born and why EcoCash? So actually. So जो हमारा बिजनेस है, इट्स बिल्ड अपॉन 3 USPs, दैट इज द सस्टेनेबल फैब्रिक, जो ऑर्गेनिक फैब्रिक है हमारा, 100% ऑर्गेनिक फैब्रिक रहता है, हमारे नेचुरलाइज है, प्लस वी आर वर्किंग फॉर द रिवाइवल ऑफ द हैंडीक्राफ्ट. सो दीज आर 3 USPs, एंड विच इज वाई इको कैश, eco stands for eco-friendliness and cash is for our own Kashmir. So that's how it was born, because we are taking a long handicraft of Kashmir with the sustainable fabric, with the organic fabric and the organic ways. जैसे कि हमने बोला already कि we are doing naturalized, तो हमारा 100% जो भी raw material है, that is organic. And how it was started, it's like Noshin, I was always very much inspired by these artisans. I used to, because my roots are from downtown, and राइट इंशा, everything, आपको these एक मिनट में मैं artisans. रोकना चाहूंगी, क्योंकि हम बात बिल्कुल करेंगे आपके चाइल्डहुड के बारे में, एंड आई वांट टू, बिकॉज आवर ऑडियंस नोज दैट देयर इज अ फ्रेमवर्क, देयर इज अ पैटर्न दैट वी फॉलो हियर। जब भी हमारे प्रोग्राम पे कोई ऐसी शख्सियत आती है जो इंस्पायरिंग है, हम शुरू से उस शख्सियत के डिफरेंट लाइफ जर्नी के बारे में बात करते हैं, देन करियर, देन व्हाटएवर एल्स दे हैव डन इन देयर लाइफ और अचीवमेंट्स दे हैव कम फॉरवर्ड विद। तो हमें ले चलिए, Sure, जैसे कि sure. आपने अभी बताया कि आप डाउनटाउन से, कश्मीर के डाउनटाउन से ताल्लुक रखती हैं, तो कैसा माहौल रहा आपके बचपन में? क्या देख के आप सीखी, ये बड़ी हुई? एंड हाउ डिड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबिलिटी और ऑर्गेनिक entrepreneurship come into your mind? How were you inspired? बचपन से शुरू कीजिए। Yes. Right. So बचपन में I was born and brought up in a business class family. So मैंने हमेशा अपने इर्द गिर्द business
मेंस को ही देखा है, बट हमारे घर में ऐसा होता है ना, बिकॉज समवेयर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली आई वाज वेरी ब्राइट इन माय होल खानदान, बिकॉज कश्मीर में खानदान वाला सिस्टम बहुत स्ट्रांगली बिलीव होता है उस पे। तो Right. एवरीबडी यूज्ड टू थिंक कि शायद मैं केस कर लूं। पहले तो सबको लगता था 10th से पहले कि ये डॉक्टर ही बनेगी, बिकॉज शी इज वेरी ब्राइट, Mhm. मार्क्स अच्छे लाए हैं इसने। तो फिर जब मैं डॉक्टर नहीं बनी, आई टुक अप कॉमर्स एज अ सब्जेक्ट, एंड देन Right. दे थॉट ओके शी विल डू समथिंग, वो एमबीए कर लेगी लेकिन साथ साथ आईएएस केएस भी क्वालिफाई कर लेगी। एंड पीपल यूज्ड टू सजेस्ट मी, आई सेड ओके फाइन, लेट्स सी। बट after doing my BB, I straight away went for journalism because I was always inclined uh, on doing things जिसमें practicality हो। मुझे लगता था कि अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं ना, अगर वो practically use नहीं हो रही है तो इसका कोई फायदा नहीं है। That's why I wanted to do journalism rather than going for an MBA, because मुझे लगता था कि शायद मैंने BBA करके I think I have learned a lot about management and stuff and all of that, and I want to do something on field. एंड यही था कि बिजनेस क्लास में, बिजनेस फैमिली में पैदा हुए, और फिर सबको लगता था कि शील ज्वाइन कॉर्पोरेट। हमेशा यही था कि प्राइवेट सेक्टर का तो उस टाइम पे इतना रुझान था नहीं कि एवरीबडी वाज लाइक गो फॉर एट गवर्नमेंट एग्जाम, यू विल डू वेल, यू आर गुड एट एकेडमिक्स, so you should do something like that. तो मैंने Right. कभी ऐसा ध्यान नहीं दिया इन सब बातों पे, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज वेरी लकी इनफ, आई वाज फॉर्चुनेट दैट माय फैमिली वाज वेरी सपोर्टिव व्हाटएवर आई हैव टेकन अप इन माय लाइफ। सो जी. बट दिस वाज आल्सो दैट कि एक बिजनेस क्लास में रहते हुए, बिकॉज माय फादर, सॉरी माय ग्रैंडफादर took up artisanship. He left his job in government services, and he was very much passionate about wood carving and everything, and he became a wood carver. He हाँ. started, doing that. जी. जी. Yes, and but ये मेरे पैदा होने से शायद बहुत पहले की बात है, क्योंकि उस टाइम पे ये आर्ट बहुत कम हो चुका था, इसका वो जो बोलबाला था वो बहुत कम हो चुका था। एंड जी. देन माय फादर माइट हैव थॉट कि चलो ठीक है, इट्स नॉट अर्निंग वेल, व्हाई इज ही यूटिलाइजिंग हिज एनर्जीज, let him like sit at home, enjoy his good old days, and you know let him just be at ease and peace. But Mhm. मेरे जो दादू है, because I have been brought up in a joint family setup, तो मेरी दादी मेरे दादू, they used to tell us stories, tales, जो भी था, they Mhm. it was my dadu who introduced Shah Ramdan, in my Mm. life. He used to narrate stories about how he came from his place, and he brought some more than 100 crafts to Kashmir, and how it was they declined with time. And अगर आप Exactly. डाउन की भी बात करें, it's full of artists. You can find any art out there, any craft out there. So मुझे हमेशा ये सुनने को मिलता था कि ये आर्ट जो है, it's losing its charm. उस टाइम पे Mm. पश्मीना का बहुत ज्यादा रुझान था, पीपल यूज टू गो आउटसाइड फॉर पश्मीना सेलिंग, और बहुत अच्छा कर रहे थे लोग। लेकिन उसमें भी फिर Yeah. आहिस्ता आहिस्ता जब मैं बड़ी होती गई तो यही सुनने को मिला कि अब तो काम है नहीं, artisans are not earning well, तो ये आर्ट डिक्लाइनिंग फेज पे है, और कहीं ना कहीं मशीन मेड हैज इन्वेडेड, there were a Mhm. lot of factors जिस चीज ने Right. इसको इन्वेड कर दिया था आर्ट। तो ये हमेशा बस मेरे दिमाग, बैक ऑफ द माइंड हमेशा मेरे दिमाग में था कि मुझे तो कुछ करना है इनके लिए, इनकी लाइवलीहुड के लिए, पर पता नहीं था कैसे करना है। तो आई स्टडीड, आई वेंट थ्रू डिफरेंट जॉब्स, आई टुक अप डिफरेंट जॉब्स, डिफरेंट फील्ड्स, आई स्विच्ड, जो भी मुझे करना था, जो भी वॉट एवर आई वॉन्टेड टू डू। And ultimately I was landed up in a situation when COVID happened. So I was moving Right. to Bangalore, so I was getting a job offer from a media college, and I was going to, it was a booming phase in my Pursue. career, so I was going Right. there as a professor. I was going to become a professor officially in Bangalore based college. It was very everybody was like, okay, it's a good thing, you will be earning well, it would be good portfolio in your career. So I said okay fine, let's give it a Mhm. try. तो मैं जाने ही वाली थी, but COVID happened. It was a blessing in disguise, alhamdulillah, for me, whatever has happened. So Mhm. I stayed back, and that's when I was introduced to this fellowship called Naropa Fellowship, which is a Ladakh-based fellowship, जहाँ पे you actually it's a course in entrepreneurial leadership, and you get acquainted with how entrepreneurs are born, and if you have an idea, how can you work on that idea, on that project, which will be Right. helpful for the Himalayan belt,
for the people of Himalayan belt, whether it's Ladakh, Kashmir, or any other Himalayan region. And मुझे जो वो दिमाग में हमेशा से था कि मुझे तो फैशन स्ट्रीम में जाना ही है, because it was always my passion. I in Right. between I learned garment making as well. But I used to वो बस मेरे तक महदूद रहा, मेरे तक, मेरी Right. फैमिली तक. I used to design clothes for them, और it was for me, because यहाँ का थोड़ा वो टेलर वाला सेटअप बहुत डाइसी हो जाता है. आप टेलर को कुछ बोलो, कुछ और बना दे. तो उस that was the reason why I took up garment making. But ये मुझे हमेशा से Right. पता था, down the line I want to do something in fashion. And when I went to Naropa Fellowship, I was asked that what do you want to do in my interview itself, and I that was the first thing that came out of my mouth, that I want to do something for my artisan community. And Hmm. my passion is in fashion line, so I I'll wanted hold you. I'll introduce. hold you there. Sorry to interrupt. Insha, Sure. it's a very important question, or the statement that you made, that I was asked there. The first question they asked me was, "What is it that you want to do?" तो हमारे कई Yes. यंगस्टर्स को ये डायरेक्शन नहीं होती है, या उनको गाइडेंस नहीं मिलती है इस चीज की कि आखिर हमें करना क्या है लाइफ में, बिकॉज देयर आर क्रॉस रोड्स. एजुकेशन चल रही है उनकी, उनके पास Right. अपॉर्चुनिटी है या आइडिया है या कुछ करना चाहते हैं वो, चाहे वो आत्मनिर्भरता कह लीजिए, या इंडिपेंडेंट वर्क, या सेल्फ एम्प्लॉयड कहना कह लीजिए, या ऑन्टरप्रेन्योरियल ड्रीम कहिए. तो कई लोगों के पास इस चीज का जरिया नहीं होता है या गाइडेंस नहीं होती है. तो आपके लिए ये जरिया, ये गाइडेंस, बिफोर यू इवन जी. वेंट फॉर नेरोपा फेलोशिप फॉर लीडरशिप इन एंटरप्रेन्योरशिप, ये कहाँ से आपको, हु गाइडेड यू ऑन दिस पाथ, यू नो, गोइंग फ्रॉम, आपने जर्नलिज्म से चेंज कर लिया एंड देन you went for this fellowship. So how did that happen? Who inspired you for that? Who guided you? So Doshi, I tell you my story. So my roots are very humble. There was Mhm. nobody to guide me actually when I started my journey. Uh, Right. Actually, मुझे properly guide करने के लिए कोई नहीं था. But you know what helped me? It was always my father used to tell me कि read whatever you can. और उस टाइम पे तो इंटरनेट हुआ ही नहीं करता था हमारे टाइम पे. It used to be only books or newspapers. अभी if you see, the horizon has been, it's very vast. So I True. would suggest जो हमारे अभी newcomers है, they can research, they can read a lot, because unless and until you don't know about a specific thing, you will not be Mm. able to narrate it to yourself whether I want to go into this field or not. उसके बाद जब आपको पता चलता है कि इतने सारे ऑप्शंस है आपके पास, तो मेरा जो True. पैशन है या मेरा इंक्लिनेशन है या मेरा इंटरेस्ट जो है वो कहाँ की तरफ है, वो उसके बाद ही आपको पता चलेगा. सो वेरी इंपॉर्टेंट इज फर्स्ट टू अनलाइटन योर सेल्फ, गाइड, देन यू विल बी एबल टू गाइड योर सेल्फ टूवर्ड्स अ सर्टन थिंग. So you Right. read a lot, because reading helps always in whatever sorts. Whether you're even abhi to reading se zyada, we can see on Instagram or any other video platform, you can see a Mhm. short motivational, whatever quotes, Video. stories, Mm. narrations, True. whatever they do. So just get yourself acquainted with what's happening across the world. क्योंकि अभी जो है अगर आप पढ़ाई एजुकेशन सिस्टम की भी बात करें, तो अभी उसका भी जो है दायरा बहुत बढ़ गया है. So Mhm. many courses have been introduced. हमारे टाइम पे it used to be डॉक्टर, इंजीनियर, Mm. जर्नलिस्ट या अकाउंटेंट. बस इतना बहुत ही एंटरप्रेन्योरशिप की तो एक नैरो बात ही नहीं होती थी. राइट. बात ही नहीं. तो मेरे को भी स्टार्टिंग में when I came to Kashmir, और I told my friends and family that I'm going to start this and that, मैंने बहुत डर डर के ही बोला पहले. तो they were like, oh, okay, when she said the boutique, in fact my journalist friends, it was I was so, what do I say, pissed off उस दिन. So one of my friends told me कि अब सब औरतों को यही करना है, तुम्हें भी बुटीक ही खोलना है. I was like, come on, I mean, there's more to it. So you राइट. should be aware about things to decide for yourself. And for me, one of the TED talks I watched on YouTube back, I think 5-6 years back, that helped me a lot. वहां पे मुझे एक लाइन जो है, मुझे याद नहीं वो स्पीकर कौन था, मुझे याद नहीं वो किस बारे में बोल रहा था, मुझे बस उसकी एक लाइन याद है. ही वॉज स्पीकिंग इन इंग्लिश, ऑफकोर्स मैं थोड़ा इसको उर्दू में बता देती हूँ ताकि सबको समझ जी. आ जाए. तो उसने ये कहा कि वो ऐसी कौन सी चीज है
जिसको करते हुए आपको ना खाना, ना पीना, ना आपकी कोई इंपॉर्टेंट चीज, अभी तो इंपॉर्टेंट हमारे लिए हमारा फोन है या हमारे फ्रेंड्स है या कोई भी चीज, तो ये सब चीजें आप Right. भूल जाते हो। तो अगर आपको पता करना है कि वो एक कौन सी चीज है जो आपका Hmm. पैशन बन सकती है या जो आपका इंटरेस्ट है जो शायद आपके सबकॉन्शियस माइंड में है, तो आप थोड़ा ऑब्जर्व करें खुद को कि वो एक कौन सी चीज है जो आप करते हुए सब भूल जाते हैं। इट कैन बी कुकिंग एज वेल, so you can become a Right. chef. It can be reading as well. You can become a novelist, you can become a writer, whatever. I mean, you have to ask yourself, you have to introspect. Introspection is Right. very important. So I think that हम that is उसको very सेल्फ important रिफ्लेक्शन notion here. भी सेल्फ जो आपने रिफ्लेक्शन भी सब कहते हैं। You reflect upon जी what has passed, you reflect upon what is your aim going forward, you reflect upon कि आपका natural inclination किस फील्ड की ओर है, चाहे वो एकेडमिक्स की ओर है, चाहे वो अपना कुछ absolutely बिजनेस स्टार्ट करने की ओर है। Since you had, I will come to a point here, since you had the environment of artisanship and business environment in your home, in your house, do you think an environment or ऐसा घर के अंदर माहौल, चाहे आपके वैल्यूज में हो या प्रैक्टिकल लाइफ में हो, ऐसा होना जरूरी है क्या? जैसे इको कैश वाज बोर्न आउट ऑफ योर लेगेसी आल्सो एंड आउट ऑफ योर ओन पैशन टू टेक दैट लेगेसी right. फॉरवर्ड, तो क्या कहेंगे आप कि I think पैशन होना somewhere जरूरी yes, है या एनवायरमेंट? आई थिंक दोनों इट गोज हैंड इन हैंड शायद, क्योंकि मेरे लिए ये चीज एक बहुत की रोल प्ले किया कि मैंने देखा दैट आर्टिजन कम्युनिटी इज सफरिंग, और मुझे दैट वाज माय पेन पॉइंट दैट आई वांट टू डू समथिंग फॉर द ओके। artisan community, for my own people, for the betterment of them and for the environment as a whole. So when राइट। how this eco cash was born, I'll tell you very interesting story short में. So I was in my हम्म। Naropa class, एक हमारी चल रही थी, और उसमें we were introduced to this ikigai concept. तो ikigai राइट। में we were asked कि आप बताओ जी, you have to come up with one pain point. And हम्म। when I figured out everything, जो भी आप वहाँ SWOT analysis and whatever analysis you do out there, so I was तो जब मुझे पूछा गया तो मैंने कहा मेरे एक नहीं, मेरे दो पेन पॉइंट्स हैं, एंड माय प्रोफेसर टोल्ड मी नो, इट शुड बी जस्ट वन, एंड नाउ हम्म। इट्स अप टू यू हाउ डू यू कंबाइन बोथ। तो मेरे दो पेन पॉइंट्स यही थे, टू डू समथिंग फॉर माय पीपल एंड टू डू समथिंग फॉर द environment. And that's हम्म। when EcoCash was born. That's when we clubbed the sustainable fabric with the राइट। handicrafts of Kashmir. सो हाँ, आई थिंक कहीं ना कहीं जो आपका जैसे आप ब्रॉटअप हुए होते हैं, जो आपने अपने माहौल में देखा होता है, इफ यू फील जी। फॉर दैट, इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट इट समहाउ, इट कैन हम्म। बिकम योर पैशन sometimes. So there are, I have seen people, my friends, who were doing some corporate job, and then they saw in their community some dogs were roaming, they were not having food, and they ultimately became their saviors. So they left राइट। their corporate job, and there are a lot of friends in Delhi, and there are people in Delhi, Bombay, or metropolitans. यहाँ पे भी, कश्मीर में भी हो रहा है. I हम्म। recently I came to know that there are some people, helping these dogs find a shelter or find food. So you एग्जैक्टली। have to always keep your ears, eyes open. Thank you for that message, Insha. And it's very inspiring to talk to you because the kind of concepts you're talking about, ikigai, and having those dreams and fueling your dreams and giving them direction. अगर आपका सपना आपको डरा ना दे, that dream is not big enough. So that is what Absolutely, I have this ideology as well, that whatever dream you have, dream big. Nobody has absolutely, put a limitation on your dreams. आप कुछ भी imagine कर सकते हैं, लेकिन अपनी इमेजिनेशन को आपको एक डायरेक्शन देने की बिल्कुल ज़रूरत है, एक गाइडेंस बिल्कुल, या एक मेंटर होने की बहुत ज़रूरत, मेंटर को रखने की बहुत ज़रूरत है, ताकि आपके जो भी आइडियाज़ हैं, उनको एक शेप मिले। सो shape आज में. का हमारा जो टॉपिक है, दैट इज़ अबाउट रिवाइवल ऑफ Kashmiri handicrafts, in particular handicrafts through organic fashion branding. Now you Right. talked about कि eco है, eco-friendly, organic, sustainable, and then Kashmir, because you wanted to do something for the local artisans of Kashmir. So how Right. far do you think you have succeeded in doing that? कितने artisans हैं आपके पास में? किन किन से आप where do you go and where are these artisans particularly located in Kashmir? वो city में हैं Right. या outskirts में हैं? Please give us some idea about that.
श्योर. सो एज यू सेड दैट अगर आप बड़ा नहीं सोचेंगे, बड़ा ड्रीम नहीं करेंगे, तो आप वहां तक शायद पहुंच नहीं पाए. ये बहुत जरूरी है. आपकी यू हैव टू सेट द होराइजन्स ऑफ योर ड्रीम्स वेरी, यू नो, फार. क्योंकि जब तो तक आपको हमेशा लगता है कि मुझे अभी वहां पहुंचना है और मैं वहां पहुंची नहीं हूँ, वहां पहुंची नहीं हूँ. सो इट्स सेम विद इको कैश. वी वांट टू, you know, be a part of every artisan's life. See, we want to touch their lives. So jahan tak hum pahunch paye, wahan tak hame pahunchna hai. And we are just 1 year old. It's हम्म, just a 1 year old baby. We are trying to nurture it, we are trying to grow it. right. हम पता नहीं अभी इसको अचीवमेंट बोलेंगे या नहीं. हम लोग के मैं पहले आर्टिजन्स की बात करूँ कि हमारे डिफरेंट डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट से हमने एक महदूद नहीं रखा है खुद को कि खाली श्रीनगर जी, तक. हाँ, हमारे लिए डिफिकल्ट हो जाता है अपना आर्टिजन से मिलना, स्पेशली विंटर सेटअप में बहुत मुश्किल हो जाता है आर्टिजन का या तो हम्म, यहाँ आना या हमारा हमारा उनके पास चले जाना. right. क्योंकि अगर वो आउटस्कर्ट्स में है मेजरली जो हमारे. बट वी ट्राई टू मेंटेन कि हमारा महीने में या तो हम एक बार मिलेंगे या तो 2 बार हम मिलने जाते हैं आर्टिजन से, अपना काम देने जाते हैं. सो वी आर Right. आर्टिजन्स इन डिफरेंट पार्ट इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कश्मीर, नॉट ओनली श्रीनगर. और ये इसलिए क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट का एक अपना फन है, एक अपना क्राफ्ट है, और उस क्राफ्ट को करने का तरीका भी अलग अलग है. तो अगर आप सोजनी की ही बात करें, अगर हम सोजनी एक डिस्ट्रिक्ट में कराएंगे, फिर आप दूसरे डिस्ट्रिक्ट में देखेंगे उसका एक अलग ही तरीका होगा करने का. इंटिक्रेसीज हम्म, डिफरेंट होंगी, कलर स्कीम्स डिफरेंट होंगे, पैटर्न्स डिफरेंट होंगे. तो बिल्कुल ये सब को इनकॉर्पोरेट करने में इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम. मुझे खुद सीखना पड़ा था, बिकॉज आई डोंट कम फ्रॉम दिस बैकग्राउंड कहीं ना कहीं. right. तो मुझे खुद सीखना पड़ा था ये चीजें. मुझे आर्टिजन्स के पास बैठ के उनसे बात करनी पड़ी थी, उनको उनसे पूछना पड़ा था कि ये क्यों, ये ऐसे क्यों, वैसे क्यों. ऑफ कोर्स दे Right. गेट वेरी, वो कभी कभार गुस्सा भी हो जाता है, बट देन अगेन हमें हमें ये करना पड़ेगा. वी हैव टू Because डू they इट. have been doing that, it's their art, they have been doing that from 20, 30 years, and to explain the Yes, basics of that, sometimes it does become a little it annoying gets for very some people. difficult. It gets very difficult, especially when But you go to we have. that's a learning, right? So you were That saying is something. absolutely Hmm. a learning. So I'm saying we have one of our artisan who is doing paper mache का काम from past Right. 35 to 40 years के बीच में वो Wow. काम कर रहे हैं. He's a good अच्छे खासे है वो old gentleman. And when you tell him ना कि सर हमको ये नहीं ऐसा चाहिए, he tells you कि नहीं मैं छपाता, you don't know about it. But then somehow you have to control your calm and somehow you have to persuade him. And Alhamdulillah, I think maybe because I'm a girl, sometimes people take me like, ठीक है यार बच्ची है बोल रही है तो कर ही देते हैं. ऐसा हुआ है मेरे साथ बहुत बार. But Alhamdulillah, all my artisans, Alhamdulillah, I have been very, very lucky enough. जो भी लोग मुझे मिले अभी तक इस जर्नी में, they have been very Right. supportive, very supportive. I That's pray amazing. How to many artisans at the moment are you working with? आपकी right. टीम में कितने लोग हैं जो डिफरेंट So, स्किल सेट के साथ आते हैं? अगर हम खाली आर्टिजन कम्युनिटी की बात करें, वी हैव 20 to 25 आर्टिजन्स विद अस, जिनको हम ऑलमोस्ट अपना जो भी कलेक्शन हम लॉन्च करते हैं उसमें हम उनको इंक्लूड करते हैं. वी आर सम Okay. फ्रीलांस आर्टिजन्स एंड वुमेन. हमारे जो आर्टिजन्स हैं, वी वांटेड टू डू ऑल women centric, but then Mm-hmm. we were told that it's not only women who run the house, it's also the men who do it. And Absolutely. we totally and completely agree with it. So what we majorly focus on women, giving empowerment to the women, but we are Right. not at all negating the artisan community. So हम लोगों के पास men भी है 40%, 60-40. अगर हम बात करें ऐसे roughly 60-40 जी, का जी. रेशियो रहता है. ज्यादातर हम हमारी women artisans है और 40% हमारे men जो है artisans है That's a wonderful from different ratio, by the way. Yeah, that's a wonderful ratio क्योंकि um, kind. हर किसी आर्टिजन का अपना एक वो mastering the art or mastering that craft. It could be a man, it could be a Absolutely, woman. जहाँ पे कि color schemes की बात absolutely. आती है, शायद औरतें इस चीज को ज्यादा अच्छी तरह से समझ सकती हैं. I'm not categorizing, please. I shouldn't Men offend also someone. do it. Men are Yes, men men also are do it. best color scheming people. You know, they can give you best color schemes. That's what I have figured out in my journey. Really, that That is they surprising. can, But you know, they mix colors in such a light way ना, वो पता ही नहीं चलेगा कि इन्होंने ये कलर उसके साथ मिक्स कर दिया और कैसे हो गया. It's like magic.
that's the beauty of handicrafts, that it works like magic. You think something, आप आर्टिजन को बोलते हो मुझे ये इस छपाई पे ये काम करना है, अब आप कलर स्कीम, बिकॉज हमारा ऐसा, हम बहुत फ्लेक्सिबल है, वी वर्क, वी एक्चुअली बिलीव इन द आर्टिजनशिप, सो वी टेल देम, वी गिव देम अ फ्री हैंड कि अगर आपको इसमें लग रहा है कि हमारे पैटर्न का कलर स्कीम नहीं है सही, आप अपने हिसाब से करो. And always they have, surprised us with the color schemes, with the patterns Exceeded they've your created. expectations. Right. Yes, it works like magic. Handicraft, hand art works like magic. It's like that. It is magic in itself. इंशा, यू आर अ वेरी गुड ओरेटर, आई मस्ट से दैट. एंड बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करते हुए. एंड आई एम श्योर द ऑडियंस इज एंजॉयिंग दिस कॉन्वर्सेशन इक्वली, especially the younger lot who feels more connected with the kind of Yes. resources we have, or the kind of facilities we have available these days, चाहे वो इंटरनेट है या डिजिटल मार्केटिंग, फॉर एग्जांपल इंस्टा है, फेसबुक है, उसके ऊपर आपके डिजाइन्स भी आते होंगे, राइट? यू हैव अ do you have social media handles that you Yes. promote your designs and your fabric on, right? तो हम इस बारे में और बात Right. करेंगे, but Yes. I would like to ask request my backstage team to please put a commercial break, because our sponsors also, we respect their contribution and we need to highlight that in our show as well. So I would request the back-end team to play some commercials. In the meantime, we will prepare for the rest of the discussion. बहुत बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करते हुए, and the dreams that you have, and Really, it's your energy. vision. Thank you. I think हर we've घर का had a भरोसा है, हर इमारत की मजबूती है, आज और कल की तामीर है, क्योंकि हम ताकत हैं, हम हैं आर्को सीमेंट, मजबूती और भरोसे के लिए सिर्फ इको फ्रेंडली आर्को सीमेंट. Good news for girl students of Kashmir. Kashmir Girls Institute, Paripura, Srinagar, an exclusive institute run by women for women, is offering coaching in medical and engineering entrance examinations. You'll be glad to know that admissions are totally free for orphan girls, along with free study material, and hostel facility will also be provided to girl students. Hurry up, the admission process is starting from 5th of August. For more information and registration, you can contact us on 600 50 44060 or 88. गटि मंज जन यी जुन गाश अस रूजिन पगहच आश अस रिश्तन बरहव गोड अस पखन कड़हव वाश सेमटेक्स सीमेंट्स रिश्तन हिज मजबूत इमारत. वेलकम बैक इंशा, एंड थैंक यू सो मच आवर ऑडियंस हमारे साथ जुड़े रहने के लिए. हम आगे बढ़ाते हैं इस कॉन्वर्सेशन को, इस गुफ्तगू को. और इंशा, हम बात कर रहे थे कि हाउ ब्यूटिफुली यू आर डिस्क्राइबिंग योर लव फॉर
the Kashmiri handicrafts or your legacy, or doing something good for the artisan community, चाहे वो मर्द हजरात हों या खवातीन हों. मैं यहाँ पे आई वुड लाइक टू पुट एम्फोसिस ऑन कि हमारी जो ये हैंडीक्राफ्ट्स की इंडस्ट्री है, या जो फैब्रिक की है, कश्मीरी फैब्रिक की है, वूल की है, पश्मीना की है, या और भी हैंडीक्राफ्ट्स हैं जैसे पेपर माशी है, वुड कार्विंग है. इट इज अ वेरी इंटेग्रल पार्ट ऑफ आवर कल्चर. हमारी तहजीब, हमारी सकाफत की का एक बहुत ही अहम हिस्सा है, हमारी कश्मीरियत का एक बहुत अहम हिस्सा है. इसी की वजह से हम जाने जाते हैं पूरी दुनिया में. चाहे वो एप्पल्स हों, फॉर एग्जांपल, whenever I have personally met somebody from outside, they're like, oh, Kashmir, apples and fabric and embroidery, and it's all so beautiful. And पिछले प्रोग्राम्स में भी ये बात हुई है कि आजकल की जो जनरेशन है क्यों नहीं इस चीज को आगे लेके जा रही है इंटरनेशनल मार्केट में. फॉर एग्जाम्पल, वाजवान है तो उसको इंटरनेशनल मार्केट में इतना ज्यादा क्यों नहीं प्रमोट किया जा रहा है. तो आपसे मैं ये जानना चाहूंगी कि गवर्नमेंट का जो इसमें गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स और स्कीम्स हैं, आपने कुछ फायदा उठाया उससे, कुछ आपको सपोर्ट मिला गवर्नमेंट इनिशिएटिव से, या आपने अप्रोच किया या नहीं किया? Please tell us something about that with regards to your work. Yes, thank you and welcome back again. So I'm welcoming you now. So Nausheen, जो आप बात कर रहे हैं ना कि taking help from government or something, I don't know why there was always this mindset of mine कि शायद मैं अगर लोन ले लूं तो पता नहीं कैसा सिनेरियो होगा, because there's a lot of uncertainty in Kashmir and all of that. But हाँ, ऐसा हुआ था, मेरा mindset change हो गया when I went through investment summits and everything in Naropa, because that's a part of our project, Right. that's part of the fellowship. तो ये फिर मुझे पता चला वहां पे कि there is something called investment, there's something called investors, there's something called angel investors. तो आपका खाली जो इन्वेस्टमेंट का या फाइनेंसेस का दायरा है ना, वो गवर्नमेंट तक ही महदूद नहीं रहता है. तो आप यहाँ तो हम यूजुअली कहते हैं चलो जेके ईडीआई के पास चलते हैं, वो फाइनेंस करेंगे, प्रोजेक्ट दे दो आप, एंड ऑफ कोर्स दे हैव सम टाइम लिमिटेशंस भी रहती हैं उनके पास. तो मैंने कभी फाइनेंसेस के लिए कभी अप्रोच नहीं किया, मुझे शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ी, क्योंकि जब मैं when EcoCash was in its blooming phase, तो उस टाइम पे we actually got a help from OYO's CEO रितेश अग्रवाल. So उनके यहाँ से हमको एक ग्रांट मिला था. It was a non-equity grant for EcoCash. He selected 5 LAPs, 5 projects from whole जो भी अभी तक cohorts गए थे, जो भी अभी तक सारे आप क्या बोलते हैं उसको, हर साल का जो आपका रहता है क्लास, तो हमारे उन 3 क्लासेस में खाली 5 हुए थे, एंड वी वर लकी इनफ कि he recognized our project and he provided us that. Not only that, it was not, of course, that's आप कितना भी पैसा बिजनेस में डाले कभी भी सफिशिएंट नहीं रहता है, बट टू किक स्टार्ट आवर प्रोजेक्ट एंड टू गिव अस दैट एज कि एक बंदा who is an international platform, he's selling his product and services on different channels, in different mediums, through different mediums. So he saw the potential. Yes, he saw the potential. Yes. So जो आप बात कर रहे हैं ना कि गवर्नमेंट स्कीम, हमने कभी ऐसा कुछ अप्रोच नहीं किया. Maybe we will be doing that in near future, because we have to expand, of course. But अभी तक ऐसा कुछ किया नहीं था हमने. तो majorly जो मेरा था money, it was from my own savings and everything. I utilized that. And yes, we actually are associated with Jammu and Kashmir Trade Promotion Organization. उनके थ्रू भी हमको 1 साल का एक प्रोग्राम which was known as Hosla for Women. We were the first batch. I was a part of that. Again, lucky enough, alhamdulillah. So तो वहाँ पे हमको सिखाया गया, जो भी लेडीज थी वहाँ पे, वो अराउंड 120 एंटरप्रेन्योर्स अक्रॉस JNK. तो वहाँ पे दे taught us how to sell, how to do financing, budgeting and all of that, जो कि शायद आपको एक MBA BBA क्लासरूम में मिले. बट उनके थ्रू हमको ये फायदा मिला कि जो भी उनका एसोसिएशन रहता है, जैसे उनके कुछ वर्कशॉप्स होते थे, उससे हमको फायदा मिला. उनकी एसोसिएशन से हमको ये फायदा मिला कि जैसे एग्जीबिशंस रहती है ऑल अक्रॉस इंडिया या बाहर. तो अभी तक तो हमने कोई बाहर की एग्जीबिशन नहीं की, लेकिन हमें कुछ उनके थ्रू एग्जीबिशंस करने का एक प्लेटफॉर्म मिला. सो दे वर वेरी सपोर्टिव इन दैट.
Uh, Right. So you've done the exhibitions in Kashmir, you mean to say? आपने कश्मीर yes, we में have done, actually we started with that only. तो अगर हमारा शायद ये नजरिया है ना महदूद के, गवर्नमेंट से आप सिर्फ पैसा ले सकते हो, लेकिन उनसे आप मेंटरशिप भी ले सकते हो. दे हैव absolutely. एक्चुअली डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स जो हमें शायद Hmm. पता भी नहीं होता, उसके लिए फिर से हमको पढ़ना पड़ेगा. तो Right. उसके थ्रू आप मेंटरशिप ले सकते हो. मनी इज नॉट एवरीथिंग. समटाइम्स इट्स एन आइडिया. अगर आपको कुछ किसी चीज के बारे में पता नहीं हो, बट आप पता करना चाहें और आप उसके बारे में पूछे और आपको पता चल Right. जाए, शायद फिर उसका रास्ता निकल जाता है आपके लिए. बिल्कुल. तो एक माइंडसेट ना कि शायद पैसा ही सब कुछ है, पैसा नहीं हुआ तो शायद मैं बिजनेस स्टार्ट नहीं करूं, ये बहुत ही गलत माइंडसेट है. इफ यू एन आइडिया, ए पोटेंशियल आइडिया विच इज अ वर्केबल आइडिया, you see Hmm. potential in it, and consult other people. If they see a potential in it, go for it. Money follows then. तो वैसा कुछ सिनेरियो है उसमें. And yes, Right. about the exhibitions, we started with the exhibitions and we are again doing with the exhibitions. So exhibitions are a good learning platform for you, because exhibitions में आपको different clientele मिलेंगे और वहाँ पे एक चीज बहुत अच्छी होती है, आप कस्टमर से फेस टू फेस बात कर सकते हैं, आप उनका Absolutely. नजरिया जान सकते हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, अगर मेरे पास Mm-hmm. ये है तो ये कैसे आपको चाहिए अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से. तो वो एक Right. लर्निंग फेज होता है. Right. Yes. And Nausheen, So coming to your yes, tell me. Yes. no, no, go ahead. Go I ahead, please. because I'm enjoying the conversation. Oh, same here. So yes, Actually, taking the before you product. take the second part of this question, I would like to say एक साहब थे साइम रशीद साहब, उनका अभी फ्लैश हुआ था स्क्रीन के ऊपर. He was praising you for the kind of talent you have, and mashallah, we have talented people in Kashmir. Great insha for taking care of the environment and artisans also. तो हम Thank you so कंग्रेचुलेट much. करना चाहेंगे आपको इनके बिहाफ पे भी और अपने प्रोग्राम के हवाले से भी, for being Thank you the so much. beacon of Thank light for other people as well, inspiring them. जी, आगे कंटिन्यू करते हैं आपके. you. We are just one small fish in a big sea, open. We are always happy to collaborate with people, learn from them, maybe teach them something through our experiences. एब्सोल्युटली. सो ये जो सिलसिला आपका अभी जो ये आपके प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज तो नहीं खैर कहूंगी, बट प्रोडक्ट्स हैं, ये आपका मार्केट कश्मीर तक महदूद है, या आप अपने जो ये कश्मीरी हैंडीक्राफ्ट्स के बने हुई चीजें हैं या फैब्रिक है या उसके ऊपर आप जो एम्ब्रॉयडरी करते हैं और डिजाइंस, हाउ वर्सटाइल आर दे एंड वेयर डज योर मार्केट, where are they most popular in international market में, हमारे regional market में, या India में on the whole? Right. So Naushin, when we started with the concept कि शायद हमारा जो है sustainable fabric का acceptance कश्मीर से ना आए, थोड़ा हमें टाइम देना पड़े अपनी जो लोकल मार्केट है उसको टू ग्रास्प इन कि एक नया ब्रांड आया है जो कि ऑर्गेनिक फैब्रिक्स बेच रहे हैं और पता नहीं कैसा होगा. देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अराउंड हैंडीक्राफ्ट एंड सस्टेनेबिलिटी इटसेल्फ कि शायद ये महंगा है, शायद ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है. तो Right. हमें वो चीज को लेके हम लोग चले थे. वी हैव दैट वाज द रीजन व्हाई वी एक्चुअली designed our website. So that was the reason we have a website in place, because we wanted to sell, maybe outside Kashmir, yeah, maybe outside India as well, because they Right. have a know-how of what sustainability is all about. Right. But to our surprise, what happened, EcoCash was just 2 days born, and we went to this exhibition. We participated over there, and we were stunned. The first customer, first hour of the exhibition, first customer, Kashmiri lady in her late 40s, and she's like, Right. I know what this is all about. You need not to tell me what organic fabric is. Just give me whatever, this and that, whatever she required. And we were surprised, at the same time happy. We were the first ones who made the first sale of the day. And Alhamdulillah, it was unstoppable from then. हमारी जो मेजर अगर हम बात करें अभी हमारे जो मोस्टली मार्केट है वो कश्मीर के है. And जी. Kashmiri people who are not just buying for one time, they come to us again. They were like कि हमको ये फैब्रिक पसंद आया था, इसमें अब हमको कलर वेरिएशंस दिखाइए, या it's like a word of mouth जो कश्मीर में गया था, And through that these is the exhibitions. strongest Yes, form but of that doesn't. marketing.
That is the strongest form of marketing, because when your product is being appreciated, it's being used, and people come back to you, means there is already a concept Absolutely. of sustainability and sustenance of business there. Yes, and Noshin, I tell you, retaining the customer in this era is very, very important and crucial. आप retain Right. नहीं कर सकते हो customer को because customer has a lot of options in the market. Yeah. आपके पास नहीं, किसी और के पास, मे बी प्राइस, मे बी क्वालिटी, मे बी क्वांटिटी, वट एवर सॉर्ट्स. सो Hmm. अगर आप कस्टमर को रिटेन करें, if the customer is coming back, yes, of course, that is a good thing. That means you're doing something. That means Yes. you're doing something out of the box. So there is something different in your brand. So yes, retaining is one checkpoint where where we also feel कि नहीं, alhamdulillah, it's going good. We are doing Right. something, and it motivates us a lot. एब्सोल्युटली. तो अभी जो आपके करंट जो आपकी प्रोडक्ट रेंज है, उसमें क्या-क्या अवेलेबल है? एंड ऑफ कोर्स देयर विल बी ऑडियंस हु वुड बी इंटरेस्टेड इन गोइंग टू योर वेबसाइट, दैट इज ecocash.in, is it, or .co.in? If you can Yes, please help us yes. with your website It's name. What is the ecocash.in. .in? Yes, Okay. it's और www.ecokash.in. ओके, वंडरफुल। तो उस पे जो वेबसाइट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन है, उसके मजीद भी आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनको कि आप प्रमोट करते हैं, वो कश्मीर बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, एंड यू प्रमोट देम आउटसाइड एज वेल? कुछ थोड़ा सा हमें आइडिया दीजिए कि Right, हाउ वर्सेटाइल इज योर प्रोडक्ट बेस, ऑर्गेनिक right. जो है, So, what जो we right. सो अभी हमारे पास जो आप ये देखेंगे वेबसाइट, उसमें खाली हमारे रेडीमेड गारमेंट्स है, बट उसके अलावा हमारे पास पेपर माशी एक्सेसरीज भी है जो हमने अभी वेबसाइट पे अपलोड नहीं की है, क्योंकि उसका एक मेजर रीजन ये है दैट वी एक्चुअली गॉट अ लॉट ऑफ कस्टमाइजेशन फॉर द प्रोडक्ट. We got a lot of orders, and we have been busy, and there were some orders wherein the client told us that we can, those were exclusive products, so client was राइट, not very comfortable in sharing the pictures, because some clients are like that. They don't want the same thing to be replicated. So हमने वैसे राइट, भी काम किया है, एंड शायद आप ये भी देखें कि हमारे जो है वेबसाइट पे तो बहुत महदूद है, लेकिन राइट, हमारे पास उससे भी ज्यादा प्रोडक्ट्स है अवेलेबल, जो हम एग्जिबिट करते हैं ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स पे भी. राइट, और जब हमारे पास ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे एक ऑर्डर आता है, मेजरली हमने जो हमारे पिछली कुछ एंगेजमेंट्स थी, दैट वाज इन बल्क ऑर्डर. तो हम लोग ने बल्क में ही काम किया. वी स्टार्टेड एज अ रिटेलिंग कंपनी, बट वी आर ऑल्सो डूइंग द बल्क थिंग, अल्हम्दुलिल्लाह फॉर दैट. तो वो कुछ चीजें आप नहीं वहाँ पे शायद आपको नहीं नहीं मिले, जो हमारे उन राइट, कस्टमर्स जो हमने बनाए थे एक्सक्लूसिव फॉर देम. और एक चीज जो वहाँ आपको नहीं मिलेगी, दैट इज एक्सेसरीज, जो मैं फिर से आपको बोलना चाहूंगी, दैट पेपर माशी की एक्सेसरीज, जैसे हमारे पास वी हैव मेड क्लचेस, and those were exclusive clutches for the brides. We made some brides, and there were some accessories and jewelry that we made that were exclusive for outside market. There were clients from outside, so they wanted to have them. वो आपको भी नहीं मिलेगी, but inshallah we are actually working on the same, and we are actually and working. all of them are going under EcoCash branding, because that's what we want to Yes, understand. ये organic yes, fashion branding है, right? yes, Sustainability yes. इससे भी बढ़ती है. But more importantly, I want to say, is sustainability just a framework, or do you think it is a mindset? किसी चीज को सस्टेनेबल बनाने से पहले उस चीज के बारे में सोचना बहुत जरूरी है. हाउ सस्टेनेबली डिड यू थिंक अबाउट द फैब्रिक दैट यू आर प्रमोटिंग नाउ? माइंडसेट के बारे में बात करें हम. राइट. सो जैसे हमने इससे पहले भी बात की थी कि बहुत जरूरी होता है, मेरे लिए था एक एनवायरनमेंट जो बना था मेरे लिए, दैट क्रिएटेड अ पेन पॉइंट, एंड देन ओनली आई वेंट फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो हाँ, राइट, एक माइंडसेट होना शायद जरूरी है, बिकॉज अगर आप कॉन्शियस कंज्यूमर नहीं है, तो आपके लिए राइट, सस्टेनेबिलिटी हो ना हो क्या ही फर्क पड़ता है. अगर एग्जैक्टली, आपके लिए प्राइस मोटिवेशन है, तो शायद सस्टेनेबिलिटी विल नॉट बी योर चॉइस.
if you are not conscious about what is happening, what disasters we as humans are doing to our environment, शायद आपके लिए sustainability important ना हो, तो शायद Right. EcoCash is not a brand for you. Maybe you can go for any other product which has synthetic fabric, which comes under fast fashion. Yes, maybe Right. that can be your criteria. So it entirely depends on your mindset, how you want to create a value, how do you want to create an impact, whether it's जैसे हमारे जो भी प्रोडक्ट होता है, ऑफ Mhm. कोर्स वी रेम्यूनरेट आवर आर्टिजन्स, जो भी हमारे साथ Right. लोग वहाँ बसता है, with the Right. promise that अगर like if we do good, if we earn good profits, you have a fair share in that. So we Right. share our profits as well, and we have done it. It's not just, yeah, it's on papers only. We have done it. So whatever things we have sold through, which came through artisans, we Mhm. shared our profit margins with them. So of course, अगर आप ये चीजें आपको matter नहीं करती, because sustainability is not just about पहनावा, Eco-friendly stuff and yeah, हाँ, exactly. इट्स ऑल्सो सस्टेनिंग अ लाइवलीहुड. तो अगर आप किसी Absolutely. का घर चला रहे हैं ना, उसको सस्टेन करें, दैट इज ऑल्सो सस्टेनेबिलिटी, विच कम्स अंडर सस्टेनेबल गोल्स 2030 ऑल्सो. सो दे Right. मेजरली फोकस ऑन दिस थिंग कि you have to create livelihoods. That Right. is one of the major factors. So yes, it starts with a mindset, and then it No, takes a shape. एब्सोल्युटली फैंटास्टिक, क्योंकि हमें सारी चीजें, बाकी सारे पहलू भी देखने होते हैं. इफ वी हैव स्टार्टेड, और फॉर एग्जांपल इफ यू स्टार्टेड दिस ऑर्गेनिक सस्टेनेबल बिजनेस, बट हाउ इज इट बीइंग इकोलॉजिकल फॉर अदर पीपल, हाउ इज इट बीइंग इकोलॉजिकल फॉर यू? इकोलॉजी से मेरा मतलब ये है कि माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि क्या ये चीज मेरे लिए अच्छी है, क्या ये चीज दूसरों के लिए अच्छी है, whatever action I'm Absolutely. taking, whatever behavior is there, Absolutely. and then क्या ये चीज अच्छी है the entire planet उसके लिए. So that is the Right. concept of sustainability, and that is where it starts from one single thought and it multiplies, right? So I Absolutely. would say, I would congratulate you on this, because you have taken into account not just the fabric, not just the material, not just your thought, but the thought of bringing in a positive change into the society and Thank you so helping much. these artisans and their families earn a good livelihood, and feel proud of themselves, feel proud of the Kashmiriyat that we have, feel proud of the Absolutely. art and craft and handicrafts that we have. So Roshni, it's a many long journey and there's a long way to go. Trust me, it's absolutely, like absolutely, it's not a one day show. It takes a lot of efforts to tell them that what they are doing is fantastic. It's commendable. Not everybody can do it. You can right, study, you can teach, but this kind of thing, like they say na, they have hands of gold, and it's absolutely. very rare to find. So but उनके जहनों में ये डालना, उनके जहनों में ये बिठाना कि आप जो कर रहे हैं ये बहुत अमेजिंग फैंटास्टिक है, ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि उन्हें शायद लगता है अगर हमें सही मुआवजा नहीं मिल रहा है, या हमारा घर नहीं चल रहा है, हमारे बच्चे नहीं करना चाह रहे हैं, तो शायद ये It is कुछ है नहीं. demotivating. हाँ, exactly. Yes, yes. And it फिर takes वो a पैसा. lot of efforts to tell them. And I would really, the people who are seeing us, I would like and I would request them to please encourage, if they know any artisan, if they know anybody, any person who has skill, हमारे बहुत सारे youngsters, they have come up with different art, किसी भी sort का जो भी art होता है उनके, don't discourage them. Motivate them in whatever way you can. Don't tell them कि हाँ तुमने ये किया, इसकी आधी तिरछी लकीर है. Just tell them, if you have done this, this is commendable. You can do better. So just try to motivate them, because that is very important. Your one single word that comes out of your mouth, they can do wonders. So बिल्कुल. kashir pachna wala kacha taran kacha maran. It holds true. It Absolutely. holds so true. एब्सोल्युटली. तो मैं यही कहूंगी कि हीरे की पहचान सिर्फ जौहरी को ही होती है, एंड यू आर वन ऑफ द craftsmen who has crafted this journey for yourself, for the people who are associated with you. आपका vision, this is the last part that we are concluding the program now, and I would like to ask you कि आपका expansion plan या vision क्या है इस eco cash को लेके? Where do you want to see EcoCash in the next few years? I will not say 5 years, 10 years, whatever you have in your mind. What is your We don't message? give ourselves deadline. We say that if we give more deadlines, there is more delays. So we tell Right. ourselves, where do we see us in next 1 year maybe. So Okay. in coming months, in next 1 year or 1 2 years, I want uh, you know
every artisan to be recognized worldwide. I want to take the craft worldwide. I don't Amazing. want EcoCash to be a brand. I want Ghulam Ahmad to be a brand. I want Khatija Bano to be a brand. So I want to take their art to wherever I can, wherever. So that would be my achievement. That would be my feat when I will take that out there, and when there will be people who would be really appreciating, and then when the artisan will be very proudly saying ये मैंने बनाया है, ये मेरा काम है. बिल्कुल, इंशा आज के प्रोग्राम की अलग एनर्जी कुछ अलग ही है because there's so much positivity coming from a youngster. There is so much clear direction, clear goals, and will and strength for your dreams that is Thank coming you. forward in our program. I'm sure the audience is going to love it, and they are already, whoever is watching us live. तो बहुत बहुत मुबारक हो आपको इको कैश स्टार्ट करने के लिए, एंड देन टेकिंग इट Thank you. फॉरवर्ड with your artisans and bringing this message out to the world that कश्मीर से जो भी चीज बनी है वो प्यार से बनी है, लोग उसको ये आर्टिजन्स प्यार से बना रहे हैं और आप इसको उतने ही प्यार से प्रमोट कर रही हैं अपने प्लेटफॉर्म पे. एनी वन मैसेज दैट यू वुड लाइक टू हैव फॉर आवर यंग एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स जो कि चाह रहे हैं कुछ स्टार्ट करना अपना, जस्ट वन मैसेज. I always have this constant one message for the people whoever is watching me. ये मेरा constant रहा है. It's that if you strongly believe in your idea, nobody is going to stop you. It's just you who stops you. So if you have faith and believe in yourself, in your ideas, just go Right. for it. Because पहला step is very crucial and important. अगर आप वो पहला step नहीं लेंगे ना, तो आप हमेशा खुद को पाएंगे एक कोने में बैठे हुए. And you will always regret it. आप हमेशा सोचेंगे मैंने क्यों नहीं किया और इसके साथ टाइम चला जाएगा. तो it's always better take risk, do it, take the first step. अच्छा गया तो अच्छा, बुरा जाएगा तो it will be a learning for you. Absolutely. It's better to fail rather than not to take a step at all Right. and regret later on that काश मैंने ऐसा किया होता. और ऐसे कई लोग हैं जो Absolutely. सोचते तो बहुत कुछ हैं but they don't take an action on that. And taking an action is extremely, extremely important. को कितना ही छोटा सा step क्यों ना हो, like you said, EcoCash is just 1 year old and it's a baby step. So you have to take those baby steps and celebrate each step, not just take them, Absolutely. because पीछे देखें आप और ये देखें कि आप कितना आगे आए हैं और आगे और कितना जाना है. दैट इज अ मोटिवेशन फॉर यू कि आप Absolutely. कितने मरहले पार कर चुकी हैं ऑलरेडी. एंड आई एम श्योर योर फैमिली मस्ट बी प्राउड ऑफ दिस, दैट वो ट्रेडिशनल कन्वेंशनल लेगेसी को आपने कैरी फॉरवर्ड करके हाउ यू हैव मॉडर्नाइज्ड इट एंड हाउ यू आर अलाइंड एंड क्रिएटिंग योर ओन वैल्यूज जो रूट के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन आगे इंटरनेशनल मार्केट में भी आप इस चीज को, इस फन को, इस आर्ट को लेके जा रही हैं. तो थैंक यू सो मच हमारे साथ आज अपना वक्त सर्व करने के लिए एंड टू इंस्पायर अस, नॉट जस्ट अस बट द यंगर लॉट as well who want to do something in their lives. So thank you so much and have Thank a you, wonderful, Roshni. wonderful evening. To you too. And thank you for inviting me. It was great talking to you. You take care and all the best. You too. Thank you very much. तो नाजरीन, आज का हमारा प्रोग्राम आपको कैसा लगा? हमें फीडबैक दीजिए, हमें बताइए. हमारी डिफरेंट चैनल्स पे, यूट्यूब चैनल पे, फेसबुक पे और हमारी सिस्टर कंसर्न जो है कश्मीर क्लैरियन, उसके साथ में, उसके हवाले से आप हमें फीडबैक दे सकते हैं. हमें बताइए और कैसी शख्सियात आप देखना चाहेंगी, रूबरू होना चाहेंगे आप इस प्रोग्राम के हवाले से. कैसे लोगों को हम लाएं और आपसे राबता कराएं या आप कुछ सीखें उनसे. आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट टाइम आपसे फिर मुलाकात होती है. तब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफिज.